Hello everyone, it's me Sam aka Queen Malika, and this is the video which was most requested by all of you guys. And in this video we're gonna share why and when and what made me come back to Toronto after a year and a half of living in India with my parents. So make sure to watch this video till the end and I will see you in the next frame. Mwah! Hello everyone, it's me Sam aka Queen Malika aka the one person who's traveling to Canada tonight. So welcome to my vlog number 3. और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा अब के सिचुएशन में कैसी है. तो मेक श्योर करें वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड आई विल बी टेलिंग यू ऑल माई एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस ट्रैवल. So right now I am in India and my bags are packed like one. This is not mine. So 1, 2, 3. So 3 bags. They're packed. And sorry, love bite. So I cannot. Well, I cannot say that I'm like looking forward to it, but let's see how it goes. So stay tuned, watch this video till the end, and of course subscribe to my channel. Mwah. आज की मेरी एक्सरसाइज हो गई क्योंकि दिस इज द थर्ड बैग आई हैव टू कैरी. गर्मी बड़ी है. चलो जस्ट टू लेट यू नो, मैं ले रहा हूँ आज एमिरेट्स की फ्लाइट क्योंकि एमिरेट्स में 2 बैगेज का अलाउंस है. एयर कनाडा मैं पहले लेता था बट एयर कनाडा ने ना जब से 1 बैग का अलाउंस कर दिया है ना और दूसरे बैग में $250 लगते हैं तो मैंने एयर कनाडा वाली लेनी बंद कर दी है. इसीलिए एमिरेट्स की मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसके अंदर 2 बैग्स का अलाउंस है. ऑल्सो क्योंकि मेरे पास में 3 बैग्स है तो आई हैव पेड $191 ऑनलाइन पे. अगर आप ये सेम चीज आप एयरपोर्ट पे करोगे आपको $250 देने पड़ेंगे. तो इससे अच्छा $50-60 बचा लो यार. तो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे अच्छा $50-60 बचा लो और ऑनलाइन पे अगर आपके पास में एक्स्ट्रा बैगेज है तो ऑनलाइन पे ही आप पेमेंट कर लो. सो व्लॉग चेक इन. बैग्स नीचे गाड़ी में डल चुके हैं. मैंने उनको वे कर लिया है. एक्चुअली मैं अपने पड़ोस की शॉप के पास गया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बैग्स हैवी होंगे बट दे वर एक्चुअली अंडर वेट. मतलब 21-22 किलो के थे. तो आई एम स्टिल स्टफिंग माई बैग्स टू 23 किलो. सो ऑलवेज मेक श्योर अगर ऐसा कभी हो कि आपको लगे कि बैग भारी हो रहे हैं तो उसको वे कर लो. और यूजुअली क्या होता है ना, वो हमारे दिल का वहम होता है कि वो बैग भारी हैं बट वो होते नहीं है. तो अगर वो हल्के निकल जाए और 4-5 कपड़े ठूस दो उसको ताकि वो 23 किलो हो जाए. सो दिस इज अ प्रो टिप क्योंकि आप पे कर रहे हो इतनी सारा टिप्स एंड ऑल उसका इतना ज्यादा फेयर है तो ऑफ कोर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. सो डू दैट. अभी क्या है, आई एम एग्जॉस्टेड. अभी 5:15 हो चुके हैं. आई गोना टेक अ शावर, क्विक शावर, देन आई विल हैव चाय एंड देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट. बिकॉज फ्लाइट जो है वो 9:30-10 की है, लाइक 9:45 की है फ्लाइट. तो 6 बजे हम यहाँ से निकलेंगे ताकि 6:30-7 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुंच जाएं. और we'll have like 3 hours before the departure to check in and everything. The procedures, like long procedures. I might not be able to shoot because वहाँ पे security reasons की वजह से मैं vlog नहीं कर पाऊंगा. बट जब सारी check in वगैरह हो जाएगी I'll gonna share my experience of how it was. So stay tuned and watch this video. पैकिंग हो चुकी है. अब हम निकलने वाले हैं. 6:30 हो गए. हम लेट हो गए हैं और ऊबर हमने बुला ली है तो अभी हम निकलेंगे. मेरी नानी और मेरी मामी और मेरे मामा आए हैं. मेरी नानी मम्मी मोरी हेलो. तो अभी हम निकलने वाले हैं. ऊबर नीचे खड़ी हुई है तो ऑफ कोर्स रास्ते में आपको सारा कुछ दिखेगा. हाँ चलो फिर आई विल सी यू. बाय. चलो जी
निकल गए हैं हम, ऊबर में हैं। कैसे पहुंचते हैं I'll update you guys. I'm with my sister-in-law, my mom. My dad is here, and then we have our uncle ji, who's the Uber driver. So update करते रहेंगे. So stay tuned. I'm in the line, बहुत अभी भीड़ हो रही है, तो अंदर जाके आपको अपडेट करता हूँ क्या हो रहा है. By the way, my parents are there. You can see. I'll update you once I'm in the airport. तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और अभी मैं चेक इन के पास में खड़ा हूँ. लाइन बहुत लंबी है. Probably gonna take another hour to just check my bags in. So thought of कि आपको बता दूँ. जैसे ही बैग चेक इन हो जाते हैं, I'll let you know the updates. So I am in the craft. So sorry, मेरे पास में टाइम नहीं मिल पाया कि मैं एयरपोर्ट के लिए शूट कर पाऊँ. But anyway, an update. I made a big blunder. That was the reason I was going back and forth. So I'll tell you the story when I reach Dubai airport, because then I'll have a little bit time to talk. So I will see you in the Dubai airport. Also, I won't be posting any aircraft pictures or videos because I have an aisle seat and I couldn't find a window seat. A, B, I'm not comfortable at all sitting in the window seat. So yeah, I will tell you the story, what happened, what blunder I made, and just an interesting experience which I think you guys should know. So stay tuned and watch this video. Bye. Hello, I am in दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भूख लग रही थी और अभी फ्लाइट के 2 घंटे है. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ईटिंग मैकडॉनल्ड्स. यहाँ पे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिली है, लाइक अरेबिया चिकन, जो कि ना ही तो इंडिया में ना ही कनाडा में मिलता है. सो आई एम ट्राइंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव फ्रेंच फ्राइज एंड कोक. सो ये खाते हैं और फिर देखते हैं और फिर बातें करते हैं, क्योंकि हैव लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस कि फ़्लाइट में क्या हुआ क्या इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से एक्सपीरियंसेस हुए और कौन कौन से मिस्टेक जो मैंने की हैं और जो करनी नहीं चाहिए थी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले हम कुछ खाते हैं, भूख शांत करते हैं एंड देन डेफिनेटली कीप वॉचिंग.
ओके ओके। सो ये जो है दिस इज़ बेसिकली पीटा टाइप की जो होती है ना, रोटी टाइप पीटा। उसके अंदर है चिकन एंड वाइट सॉस और कुछ ग्रीन्स हैं, टमाटोज हैं और क्या कहते हैं लेटस है। सो दिखने में बहुत अच्छा है, टेस्ट में इट्स ओके। दिस वॉज $36 AUD which is basically close to 800 rupees का। So taste wise it's nothing which I can compare it to, you know। जैसे मेक्सिकन रोल्स होते हैं या हमारे दिल्ली में जो हमारे रेगुलर रोल्स होते हैं उससे, और ये बिल्कुल डिफरेंट है बिकॉज ये मैदे का है। चिकन जो है वो अगेन प्रोसेस चिकन है, बट फॉर नाउ इट टेस्ट गुड। So just finished with the lunch slash whatever you'll call it. It was good. It was fulfilling and I'm feeling satisfied of hunger. I was a thirsty. McDonald's drink saved me, so that's good. Anyway, so story time. Few checkpoints यहाँ पे। तो एमिरेट्स में जब मैं बैग चेक इन कराने गया था, तो वहाँ पे मेरे 3 बैग्स जो थे वो एग्जैक्टली 22 केजीज़ पे थे। सो चेकिंग हो गया। मेरे पास में एक हैंड बैग था और एक लैपटॉप का बैग था। तो हुआ क्या, लैपटॉप का बैग जो था मेरा, दे वर नॉट अलाउइंग इट। उसके अंदर हालांकि सिर्फ एक लैपटॉप था और मेरा एक वॉलेट था। तो लैपटॉप का उन्होंने कहा कि आपको बैग रखना पड़ेगा और या तो आप बाहर दे सकते हैं या तो आप किसी के बैग के अंदर वगैरह रख सकते हैं। तो चक्कर ये था ना कि मेरे सारे ऑलरेडी सब कुछ ना पैक था और उसके अंदर जगह नहीं थी कि मैं उसको स्टफ़ कर सकूँ। एनीवे, सो लैपटॉप का बैग जो है ना, मुझे लैपटॉप हाथ में कैरी करना पड़ा और जो लैपटॉप का बैग है ना वो मुझे अपने पेरेंट्स को देना पड़ा जो कि बिल्कुल बाहर ही खड़े हुए थे। नाउ द थिंग इज़ कि मैंने लैपटॉप तो उठा लिया था, बट जब बारी आई मेरे वॉलेट को उठाने की जिसके अंदर मेरे कनेडियन आईडी वगैरह सब कुछ था, तो वो रह गया था। मैंने ग्राउंड स्टाफ से बात करी। ग्राउंड स्टाफ कहता कि लेट्स सी क्या होता है, क्या करते हैं, बट दे डिड नॉट हेल्प मी एंड डिसाइड ही हुआ कि यू नो आई गेट दोज कार्ड्स लेटर ऑन जब पेरेंट्स आर गोना सेंड दैट टू मी। सो होपफुली आई गोना गेट दोज कार्ड्स सून and now I have no access to money. Thank God I had like some money, so I converted it. I converted 1100 rupees to 47 dirhams. जिसके अंदर से I just spent 36 dirhams for the meal, and I still have few dollars left, but that's my current financial situation. That was a bad move. Anyway, mistake happens, so it was an interesting piece of information. Coming on to immigration was pretty easy. ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, हालांकि भीड़ बहुत थी और क्योंकि आई वॉज गेटिंग लेट, सो यू नो मैंने एक दो भैया से पूछा कि कैन आई प्लीज़ यू नो मूव अ लिटिल अहेड। सो दे वर वेरी नाइस एंड अंडरस्टैंडिंग, सो थैंक यू टू देम। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू टू देम। यू नो कि आपने मुझे मूव फॉरवर्ड करा, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी और थैंक यू। लाइन बहुत लंबी थी एंड यू नो दे जस्ट आस्क्ड मी प्लीज़ गो अहेड, सो दैट वाज गुड। Immigration process was very quick. The only thing you need before check-in is your COVID ka negative report and your vaccination report. So I had both, but in reality you just need one. So either you have to be fully vaccinated or you have to have a negative COVID report. So I had both, so they let me in, no question asked. So my bags were all you know below 23 kilos, so that was good. सो यहाँ से डिपार्चर टाइम पे इट वाज अ पीस ऑफ केक। हालांकि जो मेरा बैक एंड फोर्थ हुआ कि जहाँ पे मुझे लैपटॉप हाथ में लेकर जाना पड़ा एंड यू नो हैव टू रिमूव सम स्टफ फ्रॉम माय हैंड बैग एज वेल बिकॉज इट वाज 10 kilos एंड देन हैव टू रिमूव 3 kilos। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट 7 kilo वेट का ड्रामा। So make sure to check the handbag as well, because I never used to check the handbags ka weight, but apparently now they're very strict and they check the weight of the handbags as well. So that was a little update. Away I'm in Dubai, so Dubai ka
So when you arrive here, you have to go through again the check, the security check process. So that was a piece of cake as well. That was very fast. Now the interesting thing is what happens when you arrive to Canada. So just to let you know, before you even board the flight here in India, not like right now I'm in Dubai, but when you board the flight in India, they will gonna ask you if you have filled your arrive can. If you haven't, they're gonna ask you to do it right before you check your bag. So make sure if you haven't done that arrive can wala thing, you should be doing it right before you actually arrive to the airport. So that's a one thing which is mandatory, and I guess everyone needs to do it if you're coming in these times. So yeah, just get your vaccination, get your COVID. It's not mandatory, but it is advisory, right? Just keep both in hand. If anyone does any drama, you like, yeah, here I have a vaccination report, here I have a COVID negative RT-PCR test result, so you're safe. So yeah, that's the update for now. Now I'm gonna wait for my flight, which is in another hour and 15 minutes. So I'm gonna wait for that. So stay tuned, watch this video, and I'll see you when I reach to Toronto. Okay, so stay tuned. So I'm waiting in the waiting zone. 3 a.m. here in Dubai. The boarding has started. Interesting thing. Checking the time पे they are asking for the arrive can. So of course, जैसे मैंने आपको बताया, arrive can जो है fill कर लें, and they're gonna scan it for you before you actually board the flight. So yep. Let's see कितना टाइम लगता है. अभी तो खैर बिजनेस क्लास वाले board in कर रहे हैं. So probably in next 15-20 minutes we're gonna board the flight, and then 14 hours की journey है almost. My god, 14 hours in flight, I'm gonna die. Anyway, so 14 hours का flight, and then once I'm back in Toronto, I'm gonna let you know about the stuff, the immigration and all. So stay tuned. नहीं तो कल ही खराब हो गया. Stay tuned. Bye. Made to Toronto, just landed, now going to the immigration office. So once everything is done, I'm gonna meet Rajat. So I'll let you know the updates. Okay, thank you, bye. So done with the immigration. Now I'm here for collecting my bags, and it is taking too much time. But once I am done with here, I'll gonna make the continuation video. So make sure to watch this video, and I'll gonna tell you an interesting story about how they have changed the immigration process in Canada. So stay tuned. Once I'll reach my place, I will gonna update you guys. So thanks. Now I've collected the bag, so I'm gonna wait for Rajat, who's gonna pick me up. If you don't know who Rajat is actually one of my first friends I ever made in Canada. So he's coming to pick me up, and then we are heading downtown. So wait करते हैं Rajat का, and then downtown head करते हैं. So I'll see you when Rajat arrives. Meet my first friend of Canada, Mr. Rajat Sharma. Wow. I'm just kidding. So meet Mr. Rajat. He's actually one of my first friends, and he came to pick me up. Oh, 1.5 साल में इसने मसले बना लिए. Hello everyone, it's me Sam, aka Queen Malika, aka I am in Toronto. So
I'm here at my friend's place, staying here for a few days. So yeah, I've made it to Toronto. I'm gonna tell you about the immigration process. So yeah, so immigration process जो है कनाडा का वो बहुत चेंज हो चुका है. जब मैं पहली बार आया था तो वहाँ पे वो मैनुअल जो जो ऑफिसर्स होते हैं, यू हैव टू गेट इन द लाइन, आपका वो पासपोर्ट चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड देन you clear the interview process and whatever and then you pass. But now अब क्या है, उन्होंने शायद लास्ट एक साल से, कि I remember last year when I came back there was still the same option, but वहाँ पे कुछ सेल्फ चेक इन के उन्होंने ऑनलाइन पे उन्होंने ना सेल्फ चेक इन स्टार्ट कर दी थी, तो उन्होंने कंप्यूटर्स लगा लिए थे जब लास्ट ईयर आया था. बट दिस टाइम व्हेन आई एंटर्ड कनाडा इट इज़ ऑल computerized. So you have to scan your passport or your visa, or if you're a permanent resident, you have to scan that. And then they're gonna ask you the declaration, okay, what are you bringing to Canada. So initially, even till last year when I came back to Canada, they used to give this small kind of piece of paper, which was the declaration form. So you have to answer the questions कि आप क्या क्या लेकर आ रहे हो, आप $1,000 से ज़्यादा कैश न लेकर आ रहे हो या नहीं लेकर आ रहे हो, आप कुछ खाने पीने का सामान लेकर आ रहे हो या नहीं लेकर आ रहे हो, एंड कपल ऑफ क्वेश्चंस, राइट. तो अब क्या है, वो सारा जो डेक्लरेशन का जो है, और आपका पासपोर्ट स्कैनिंग और वीज़ा स्कैनिंग, और अगर आप पीआर कार्ड होल्डर हो तो वो पीआर कार्ड जो है वो सारा आप कंप्यूटराइज्ड वे में करोगे अब. Or then you get a receipt. So after getting the receipt, you will still be meeting a physical officer, like a person, जो immigration officer है in person, right? So they're gonna ask you for that ticket जो कि उस computer से आपको generate होगी, and then they're gonna ask you questions. But what I have seen, कि if you're a Canadian citizen or a permanent resident, they hardly ask you any questions, right? The most of the time they just ask you one question, what was the purpose of your trip, right? जैसे मैंने कहा था, they asked me two questions कि what is the relation of me with Canada. So I just said that I'm a PR holder, I'm a permanent resident, and that was the only. Oh yeah, they asked me my name, that was my first question, and then the second question was what's your relationship with Canada. So I said I'm a permanent resident of Canada, and I showed them my card, and that was the only two questions. But but अगर आप वीज़ा पे हो तो जो अब उसकी लाइन होती है, that's like a long line. तो okay, here's the thing. तो जब आपके पास में कनाडा का पासपोर्ट है या पीआर होल्डर हो, तो लाइंस जो हैं वो बहुत इजीली मूव करती है, बहुत फास्ट मूव करती हैं, बहुत क्विक मूव करती हैं, एंड दे हैव अ सेपरेट बूथ फॉर द कनेडियंस एंड द परमानेंट रेजिडेंट्स. बट अगर आप वीज़ा पे हो, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे हो, वर्कर वीज़ा पे हो, सो देन यू हैव टू बी इन द लाइन. यूजुअली वो लाइन बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं. लाइन का लगने का प्रोसेस वही है कि आपको कंप्यूटराइज जो आपके लगे हुए हैं, दे विल टेक अ पिक्चर ऑफ यू, यू हैव टू स्कैन योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड देन अगेन जैसा मैंने आपको बताया, वो आपको रसीद देंगे, तो वो रसीद लेके आपको लाइंस में लगना पड़ेगा. तो रिस्पेक्टिव लाइंस में आपको लगना पड़ेगा. कनेडियंस परमानेंट रेजिडेंट्स की लाइन अलग होती है, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और बाकी ये जो है ना, जो वीज़ा पे हैं उनकी लाइंस अलग होती हैं. तो जो रेगुलर जो स्टूडेंट वीज़ा, वर्कर वीज़ा, विजिटर वीज़ा जो है, उनकी लाइंस लंबी होती हैं यूजुअली, और जो कनेडियंस की और परमानेंट रेजिडेंट की लाइन है वो छोटी होती है और वो जल्दी मूव होती हैं. तो मेरे को इमिग्रेशन प्रोसेस में लिटरली लेस देन 2 मिनट्स लगे थे. बट जो मेरे साथ आए थे जो कि स्टूडेंट वीज़ा या वर्कर वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे थे, उनकी लाइंस बहुत स्लो चलती हैं और दे आस्क यू लॉट मोर क्वेश्चंस. So that's like the main difference. So anyway, so the immigration process was very fast for me. I went through like literally in 2 minutes. They didn't ask me questions, like lot of questions, and yeah, so it was very easy. So travel था मेरा, हालांकि दुबई से टोरंटो, that was like 13 hours का flight.
exhausting reason being because उस फ्लाइट में बहुत सारे बच्चे थे, like very young, you know, children less than 2 years old. They were like constantly crying, and it was like that time of the day when you just want to sleep. But again, I can understand, you know, the parents का जो pressure होता है travel करना with their children and all. So yeah, हालांकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, but thank God I made the trip. And yeah, it was a fun experience coming to Canada after 1.5 years of staying in India. So yeah, different lag raha hai, but again, you know, when you come back to where you have lived for 5-7 years, you just feel that, oh, you're back in your old life. So nothing like too different. I felt, oh, this was the place where I used to live, right? And I'm coming back after a short trip. So I was, before I made that trip, I was like, oh my god, पता नहीं मैं कैसे feel करूँगा? Did I feel welcome? ऐसा कुछ होगा, you know? Did I feel disconnected to the place? So luckily ऐसा नहीं हुआ, right? I instantly was like, oh my god, yeah, I used to, you know, roam around on these streets like for seven years. So now I feel okay, that trip was like a very short piece of my life जो कि I spent with the family, and awesome experience, though there was lots of ups and downs, but awesome experience. So yeah, now I'm back. I'll show you how it looks outside the apartment because the view is beautiful, and you can see sea and tower right outside where I am, you know, staying. So I'll show you the outside. There is harbor front. Harbor front is like a beautiful, आप walk करने जा सकते हैं शाम में. It's amazing. So now you're gonna see the outside view of Toronto right now. It's like 7 in the evening or 7:30 in the evening. I'll show you that. And with that note, I would like to say thank you everyone whosoever have watched this video. I really appreciate it. If you're still here till now, make sure to subscribe to my channel and follow me on Instagram at queen_malika. And if you have any questions in general, make sure to ask me that, because that's the most important thing in my channel, that I want to interact with the viewers and want to know their experiences and their ideas and what they want to see in my future videos. So thank you so much, and I will see you in the next video. Stay tuned and stay blessed.